We can hear him. Hare Krishna. Now is this visible, audible? Yes, 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 Prabhu. Perfect. Okay, good. Very good. Hare Krishna. So let's start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है। आप सबको अगर याद होगा, हमने पिछला क्लास थोड़ा कुछ बाकी रह गया था देखने के लिए। पिछला क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह वेद और हमारे जो भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं उसका हिस्ट्री के बारे में हम वर्णन कर रहे थे। और हम ये प्रसंग में थे, we were discussing how this Bhagavad Gita and whatever Ved, Puran, these are all not some superstition. ये कुछ अंधविश्वास नहीं है। These are all higher dimensional science. And in Vedic times, वेद में जो साइंस के बारे में वर्णन किया गया है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है जो हम अभी देख रहे हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। So going ahead, we will see how there are archaeological findings, matlab there are excavations which confirm Vedic history. Like there are archaeological findings which confirm that there was this bridge. Ramayana speaks about a bridge that Lord Ramchandra ने एक bridge बनाया था। तो archaeological findings से ये ब्रिज के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड कार्बन डेटिंग, मतलब जिससे आप पत्थरों का हिस्ट्री पता लगा सकते हैं कि ये किस जमाने का पत्थर है। तो आर्कियोलॉजी लोग वो कुछ करते हैं कि कार्बन का कितना लाइफ साइकिल चेंज हुआ है, क्या हुआ है, तो अपना उसका एक विज्ञान है। तो उससे साइंटिस्ट लोग पता लगाए हैं कि एटलीस्ट ये there is a reference, at least it is 17 lakh years before it happened, and which actually matches with our history of Ramayana in Vedic history. So this shows that this bridge actually was built by Lord Ram, and even the archaeological science also proves that. So it is not just some Ramayana is a mythology. Actually, it happened like that. Now it is up to us whether we put faith on it or do not put faith on it. But it actually happened. Similarly, there is a nice video you all can see. Just 1 minute. I will give. Once upon a time, an ancient Indian legend begins. There was a city called Dwarka, a city so wondrous and beautiful that Hindu scriptures describe it as a fairy tale kingdom. Prasad Lakshair Navavir Jushtam, Dwarka boasted 900,000 royal palaces. All
900,000 royal palaces. What is 900,000, Vijay? 9 lakh or 90 lakh? No, 9 lakh, Prabhu. 9 lakh. So 9 lakh palaces were there in Dwarka. And Mahabharata speaks about a wonderful description of Dwarka. constructed with crystal and silver and plenteously decorated with huge emeralds. The city was filled with birds and bees flying about the parks and pleasure gardens. Ruling over this magical kingdom was the Oh, what happened? handsome, generous, and much adored Krishna, the Hindu god of devotion. Why it is stopping? Dwarka, lying on the western coast of India off the Arabian Sea, is a fishing town, home to 52,000 people. It shares the same name as the legendary magical kingdom described in the ancient Hindu scriptures. But the only similarity between the two today are the thousands of pilgrims who come here to worship Lord Krishna, the Hindu god of devotion. The tales of Krishna and his lost city were long thought to be a mythical legend. But a recent archaeological discovery may prove that Krishna's Dwarka actually lies beneath these very streets. I took up the challenge to find out if really This personality, all of you are able to see and hear? Vijay? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. This personality has done various excavations in Dwarka, and he's a very famous archaeologist, and he has also found out the date of Kurukshetra war. There is another video for that, and that we will not go through. But here we are going through how the excavations of Dwarka, he has found out actually there was a lost city of Dwarka, as mentioned in Mahabharata. existed. Dr. S.R. Rao is one of India's most preeminent archaeologists. 20 years ago, he was called to the town of Dwarka to excavate this temple. We came to remove a modern building which existed here because that was obstructing the view of the temple. During what he thought would be a simple excavation, he came upon an amazing discovery. An ancient temple lying intact, just beneath the first one. Then we started digging further deeper in order to know if there are earlier temples. What he found was layer upon layer of temples, built one on top of the next. 3 millennia of history in just 100 feet of soil. But it was beneath the last temple that Rao came across an amazing find that would change his life forever. Shells, pottery shards, and iron artifacts. What appeared to be the remains of a city washed over by the sea. Rao immediately thought of the stories from his childhood. Could these be the remains of the lost city of Dwarka? The answers, Rao believed, lay in the pages of the ancient Hindu scriptures of the Mahabharata. Krishna's Dwarka is only one story in this legendary Hindu epic. Written in the ancient language of Sanskrit, the Mahabharata is the longest poem in the world, and to Hindus as sacred as the Christians' Holy Bible. The story of Krishna ends with his kingdom, the city of Dwarka, sinking into the ocean. Mahabharata says, Haribol, it is audible? Yes, Hare Krishna. Prabhu. So Mahabharata says that this Dwarka was submerged when Krishna left this world. The entire Dwarka was submerged. It was in the middle of the ocean, and it got submerged by ocean again when Krishna left. So he started doing deep sea diving to find out whether there is
So Rao headed for the sea. But finding a lost city at sea would prove to be a challenge. But the whole question was where to look for this submerged city of Dwarka. I mean, in the sea you are not sure where to find it. Rao began randomly searching areas close to the coast of modern-day Dwarka. At first, it proved harder than he had envisioned. Divers wrestled with the strong currents of the Arabian Sea and murky waters. But his efforts soon paid off. Not far off the coast to present-day Dwarka, Rao and the divers stumbled upon a discovery even greater than he had imagined. On the fourth day, we found these blocks of stones used for construction. 70 feet beneath the waves lay the remains of what appeared to be an underwater metropolis. Massive sandstone walls, streets with cobbled stones, a drainage system, and a huge gate. तो अंदर उनको मिला कि प्रॉपर पूरा जैसे सिटी में रहता है ना, ड्रेनेज सिस्टम एंड रास्ता, बिल्डिंग्स का आधा आधा बिल्डिंग्स का वॉल्स, एवरीथिंग दे फाउंड. Pointed to a large city. Thousands of three-holed anchors, identical to those found in Cyprus and Syria from the same time period, implied a bustling port. Rao then followed the trail of ruins to an island located 19 miles out to sea. It was here, not far from modern civilization, that Rao came across another discovery. Standing in plain sight for centuries were the remains of a walled structure. First we saw what was on the shore, and that was a small bit of the big fortification. And as we went further up, we came across that 150-meter long wall. Rao's discoveries So they came across a 550-meter wall fortification of in an island. एक island में द्वीप में उनको एक पूरा 550 मीटर का दीवार मिला पत्थर का. Lifelong mission. Over the next 8 years, his excavations eventually uncovered the remains of a sprawling city of around 10,000 people. It had obviously been an international port, and the man-made fortifications appeared to be a protection against both man and the sea. One day, while sifting through the muddy silt from the ocean floor, Rao found what he'd been searching for. तो फाइनली उनको ये चीज मिला, ये चीज आप देख पा रहे होंगे. दिस इज कॉल्ड ए मुद्रा. A carved seal with the imprint of a three-headed animal. For Rao, this was the missing link between the myth and the reality. For in the Mahabharata, this seal is described in the exact same way. Known as a mudra, it is an identification card carried by residents of Krishna's Dwarka. ये जो मुद्रा है महाभारत में लिखा गया है कि ये हर द्वारकावासी के पास रहता था. हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है? यस प्रभु. तो हर द्वारकावासी ये मुद्रा रखते थे एज एन आईडी कार्ड, जैसा हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो एज एन आईडी कार्ड टू एंटर द्वारका. Otherwise, who will know who actually where Dwarkavasi is entering or someone else is entering? Says it is the duty of the guard to see that every citizen carries a mudra. For Rao, the mudra established irrefutably that the Mahabharata and the story of Dwarka was not a myth, but an ancient historical record of events. So,
Just 1 minute. Hare Krishna. So in this way we can see that how महाभारत में जो लिखा हुआ है मुद्रा रहता था वो मुद्रा भी मिला है. समझ में आ रहा है? महाभारत में is written that there is one mudra which this all Dwarkavasis used to carry. And वो मुद्रा भी डीप मतलब समुद्र के अंदर खोजने से वो मुद्रा भी उनको मिला. अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम द्वारका था विश्वास करें या ना करें. सोचिए. So it is up to us whether to believe Dwarka was there or not. It is up to us whether to believe that Krishna was there or not, Mahabharata was there or not. हमारे ऊपर निर्भर करता है. इतना सब कुछ देखने के बाद. और ये तो हम फेर बदल नहीं कर रहे. It is aired in Discovery Channel only. तो इस तरह Dwarka is not a myth. Krishna is not a myth. Bhagavad Gita is not a myth. And but when we speak that Bhagavad Gita is mythology, then actually we are speaking, our speech is mythology. But ये word कहाँ से आया इंडिया में mythology? पहले जमाने में कोई नहीं सोचता था कि रामायण mythology है, महाभारत mythology है, कृष्ण mythology है, spirituality mythology है, उसका कुछ काम नहीं है. कहाँ से आया? तो वो अभी हम देखेंगे लास्ट में कि from where this word mythology came. So these are more photographs of Dwarka which had been did. Actually he did much year before. So why Indians considered Vedas as mythology? So this is a long history. Little bit आपको समय लगेगा समझने में. 2-3 मिनट लगेगा कि जब Britishers came to India for doing their business. Now when they came to India, they found out that Indians do not require our products. That is why they send one person called this personality, which you see in this picture. Where is the? Yes. So this personality called Macaulay. So this Macaulay, he was doing market survey. You understand what is called market survey? Actually, Britishers had already come much before. 1757, they established the East India Company. Correct? You remember? I think I am correct. Am I correct? Yes, Anyone? Prabhuji. Yes, 1757, if I am correct. They created the East India Company in Calcutta, I think, or somewhere in India. So, but their business was not going that well. They are not able to sell their products. They are not able to establish their market here. So they sent this Mr. Macaulay for doing the market surveys. क्या problem है इंडिया में? क्यों हमारा बिक्री नहीं हो रहा है? सब जगह. That time British Empire was so strong. They were telling, it was told that the sun never sets in the British Empire. You know what is the meaning? Practically wherever the sun travels all over the world, the Britishers had colonies. The sun never sets for the British Empire. They used to tell with pride. So that was the. But India में हमारा क्यों नहीं चल रहा है? Why India में चल नहीं रहा है? So they sent this personality Macaulay, who did the market survey, and in 2nd February 1835, he came with his theory or with his philosophy or with his findings of market survey. क्या उनको पता चला क्यों हमारा market सही चल नहीं रहा है? So this is an extract from the speech of Macaulay, which he addressed in the British Parliament. So this was given addressed on 2nd February 1835 in British Parliament by Macaulay. So we will read that now. Vijay, can you help me to read? Yes, Prabhu. I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar. I have just 1 minute. Okay. I have put it on the text this side so that others also can, because reading from that it will be difficult. Yes, padhiye. Yes, Prabhu.
I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who's a beggar, who's a thief. You know, in 1700s, there is something called Mahipal archives. You can search it in the Google. It says that India's GDP was 27%. 27% GDP. Now we are struggling at 4%. And जो भी 4% दिखाया जा रहा है वो शायद है कि नहीं पता नहीं, 5-4% जो भी दिखाया जा रहा है. 27% was India's GDP. एंड ऐसे नहीं कि पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन उस समय भी अच्छा खासा था. ऐसे नहीं कि उस समय पॉपुलेशन कम था, जीडीपी ज्यादा था, ऐसे नहीं. जीडीपी वाज 27%. Yes. So there was no beggar and no thief in India. Yes. Next. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. Hare Krishna. So this Macaulay is telling that I have not seen such wealth, I have not seen high moral values, and unless we break the backbone of India, that is the spiritual and cultural heritage, we will never be able to establish our market in India. Yes, go ahead. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Haribo. Jai Macaulay Maharaj ki. So in this way, Macaulay did his market survey and found out that we need to replace India's education system, India's language to English. We need to replace everything and put in the minds of Indians that if you cannot speak English, if you do not wear, if you follow this old culture and what you are telling, it's all useless. But how they are going to do it? So this is market survey. Macaulay didn't do it. He just found out what to do. And then the Britishers employed this personality called Max Muller. So this Mr. Personality, he is called Max Muller. After all the findings, the Britishers employed him. He came to do what? Yes, Vijay. The word Hindu mythology was coined by Indologists who wanted to divert the sincere Vedic followers away from their own religion to Christianity. Yes, the first thing they said that आपका जो धर्म है वो माइथोलॉजी है, वो कभी हुआ ही नहीं. ऐसे कभी हो सकता है? कोई मुरली बजाते हुए कोई आके पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध कर सकता है? ऐसे बकवास है. व्हाट यू आर थिंकिंग? ऐसे कोई हो सकता है? ये सब बकवास है आप सब जो पढ़ रहे हैं. ये सब माइथोलॉजी. माइथोलॉजी वर्ड इट कम्स फ्रॉम मिथ्या. मिथ्या मतलब फॉल्स. ये सब फॉल्स है, बकवास है. And he started making interpretation of Vedas as mythology. He was the first person to coin the word mythology. Yes. In 1876, Max Muller wrote to a friend, India is much riper for Christianity than Rome or Greece, where at the time of St. Paul. He added that he would not like to go to India as a missionary because that would make him dependent on the government. Yes. So Max Muller said that I am not going to go as a missionary or anything. I will do something else. His preference was this: I should like to live for 10 years quietly and learn the language, try to make friends, and then see whether I was fit to take part in a work by means of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown,
and the way opened for the entrance of simple Christian teaching. Yes. So I will try to see that overthrow everything, but I am not going to go as a missionary or anything. I will go very quietly, misinterpret all the Vedas, and ensure that Indians lose faith on their culture only. उसके बाद मेरे को कुछ करना ही नहीं, right? So we have to see how the Britishers cunningly made us fully dependent on them. In August 1947, 15th August 1947, India independently became dependent on the Britishers. Though it was our Independence Day, but we actually independently declared our dependence. So these Indologists, who this Max Muller was the first Indologist, they came to study the Indian culture, and in the guise of studying the Indian culture, they actually misinterpreted everything and told that these are all mythology. ऐसे कोई हो सकता है कि देवता लोग हैं, क्या आप सब देवता को पूजा करते हैं? कहाँ देवताओं को देख पाते हैं आप? देवता लोग नहीं है, ये सब रामायण मिथ्या है, महाभारत मिथ्या है, ये सब अंधविश्वास है, बकवास है. So Britishers actually quietly they destroyed the faith of the Indians on Vedas, on Vedic scriptures, on Bhagavad Gita, Mahabharata, and Ramayana. And that's how today we see none of them, none of our today's young generation, if you say that आप थोड़ा भगवद गीता पढ़िए, हाँ भगवद गीता मेरा प्रेस्टीज लीक हो जाएगा, हाँ? इंपोर्टेड सिगार्स जो ब्रिटिशर लोग भेज रहे हैं, अमेरिका से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, ड्रग्स खाने में इंडियंस लोगों को कुछ हैरानी नहीं है. हीरोइन, कोकेन, एलएसडी खाने में कॉलेज में हम देखते हैं, मैं तो खुद आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरे को पता है क्या होता है, आप सबको भी पता है. इंपोर्टेड ड्रग्स खाने में इंडियन लोगों का बेइज्जती नहीं होता है, बच्चों का, आजकल के लड़कों का, लड़कियों का. इंपोर्टेड दारू पीने में बेइज्जती नहीं होता है, बट भगवद गीता माइथोलॉजी. सोचिए, तो ये so we are becoming slaves of Britishers. We have actually become slaves. And भगवद गीता पढ़ने में, भगवद गीता क्लास तुम कर रहा है, हाँ? तो ये भी कोई उम्र है? तो कौन सा उम्र है? तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह we have lost our faith on our spirituality because of this poison that the Britishers have put in our brain, right? Next. But are actually these Vedas relevant? इनका कुछ जरूरत है क्या? So we see that the message of the Vedas are very much relevant. Whole world is now doing yoga and meditation. Next week we are going to celebrate International Yoga Day. There is more, yoga is more famous outside India than in India. You know that? Yes. So whole world is now understanding the benefits of yoga, meditation, Ayurveda. Everyone is now shifting to natural lifestyle, naturopathy, Ayurveda techniques. Now it is adopted all over the globe. And Bhagavad Gita is also transforming lives of many people throughout the world. There is a famous story. This is a real story. When Srila Prabhupada went to London for the first time. जब Srila Prabhupada जी जब लंदन में गए, तो लंदन वासी एक रिपोर्टर आया था, because to ask कौन आ गया स्वामी जी लंदन में. तो रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हैं, इधर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? तो श्रील प्रभुपाद बताएं कि तुम ब्रिटिशर लोग मेरे देश को पूरा लूटमार कर दिए और 200 साल तक मेरे देश को ऐसे लूटा कि गरीब देश बना दिया और पूरा लूट के तुम्हारे ब्रिटिश म्यूजियम में डाल दिया और सबको दिखा रहे हैं कि हम ब्रिटिश म्यूजियम में ये सब डाला है. आपका तुम्हारा ब्रिटिश म्यूजियम तो पूरा चोर डकैत का माल है. वो रिपोर्टर पूरा डर गया, बाप रे, ये स्वामी का तो क्या दम है, मतलब. तो फिर श्रील प्रभुपाद बोले, पर
तुम लोग इतना चोरी किया, इतना डकैती किया हमारे मेरे देश से, पर एक चीज भूल गया, सबसे सुनहरा जो रत्न है उसको भूल गया, उसको देने के लिए मैं आया हूं। तो फिर रिपोर्टर पूछा क्या है स्वामी जी, एंड फिर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता दिखाया कि ये तुमने चोरी करना भूल गया, इसलिए तुम लोग इतना दुख में हो, और ये तुमको अगर मिल जाएगा तुम लोग अभी आनंद में रहोगे। तो इसलिए मैं आया हूं, ये अमूल्य रत्न तुम जो चोरी करना भूल गए थे, इसको तुम लोग को फिर से देने के लिए। तो ब्रिटिशर्स लूटेड आवर कंट्री, बट श्रील प्रभुपाद एक्चुअली आउट ऑफ कंपैशन, करुणा के वजह से वो लोग जो हमारे देश को लूटे उनको सही ज्ञान दिए जाते। तो भगवद गीता इज द रियल वेल्थ, एंड सो मेनी पीपल nowadays are reading Bhagavad Gita. In India there is no course on Bhagavad Gita, and but in Western countries there are so much of course on Bhagavad Gita, research on Bhagavad Gita. बट इंडिया में कोई अगर बोलता है कि मैं भगवद गीता के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, भगवद गीता के ऊपर रिसर्च, ये भी कोई रिसर्च है क्या? But in West, so many people are doing research on Bhagavad Gita. They read Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is a well-known book about spirituality and transforming people. Many people by reading Bhagavad Gita actually have got saved from committing suicides and serious depression. Serious depression. So in this way we can see that if Bhagavad Gita is not relevant today, how it is saving people's life from such calamities and tragedies. So that means it is really it has power. There is a story of one American gentleman. This American gentleman was extremely depressed in his life. My Gurudev actually met him. He tells me tells this story in one class. Radhanath Maharaj tells in one class. So this gentleman was extremely disturbed and depressed, and he was really he was convinced that he will commit suicide, and he had also decided the date when he will commit suicide. And in West, there are something called laundromats. You know what is called laundromats? Vijay, can you explain what is laundry? How laundry happens in US? You are in US. Yes. So actually, we don't have, everybody will not have the laundry at home, the washing machines and the dryers. So it is a public place where we have to pay, we have to put 25 cents to wash our clothes. And that's how we wash and dry our clothes. So everyone doesn't have washing machine. So, and there are no dhobis. Dhobis will be very costly. Labor is very costly. So you have to take your clothes, and there is a public place where there are washing machines, and you put it, and then it comes out washed and clean, and वो सब हो जाता है जो भी है. So this man went to a laundromat, and you have to wait some time till it gets clean. So he was waiting outside, and he had a watermelon. तरबूज खा रहा था वो, and he was really disturbed. और तरबूज खा के तरबूज का जो सीड्स है वो डस्टबिन में डाल रहा था. You are understanding? खाने के बाद थू करना पड़ता है ना, तो डस्टबिन के सामने खड़े होकर थू कर रहा था. तो इस समय वो क्या हुआ, बिकॉज ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड ऑलरेडी, तो वो तरबूज भी डस्टबिन के अंदर गिर गया हाथ से फिसल के. And this person got so frustrated that how can my tarbooj, I cannot eat my tarbooj also. Life is so frustrating. वो फिर हाथ घुसाया डस्टबिन में अपना तरबूज निकालने के लिए. तो वो तरबूज क्या निकलेगा, एक किताब जैसे लगा उसको, तो निकालता है तो भगवद गीता मिलता है उसको. तो ये कौन सा क्या आ गया. तो लॉन्डरमॉट के सामने वो भगवद गीता पढ़ने लग जाता है. कुछ पेज पढ़ने के बाद उसको इतना उसको एहसास होता है कि he forgets all things about suicide and all,
takes his cloth, goes to his home, starts reading Bhagavad Gita, and then finds some ISKCON center nearby and becomes a nice devotee. And he doesn't commit suicide. The person who had decided to commit suicide, he was so frustrated. He himself tells the story. My Gurudev says this story. So, and he is a foreigner. It's not that he's an Indian. So in this way, if Bhagavad Gita has no power to transform, it is not relevant, it's just a mythology, how it is able to transform the lives of people? So it has great power. Only problem is we have lost faith. We Indians have lost faith on its power because of the poison that Mr. Max Muller and Macaulay and all these Britishers had put in our brain. So we have to clean our brain of all the gandagi. One time, Srila Prabhupada was complained. Some of the disciples came to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, Srila Prabhupada is Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is founder of ISKCON. So Prabhupada, all are complaining that we are a brainwashing movement. हम किसी तरह लोगों को समझा बुझा के हमारा चंगुल में फंसा देते हैं. We are brainwashing. Prabhupada said, then we are doing good. Their brain is filled with all stool and urine. All गंदगी पड़ा हुआ है उनके ब्रेन में. कुछ भी श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं है. And because of which so much horrible things are happening. तो अच्छा ही है ना, हम उसका सफाई कर रहे हैं. तो इस तरह हमारे ब्रेन में गंदगी डाल दिया है ब्रिटिशर लोग, जिसके वजह से हमारा श्रद्धा चला गया है भारतीय आध्यात्मिकता के ऊपर. और उसके ऊपर हमारे भारत के बाबा लोग इतने स्कैंडल किए हैं 100 साल में कि लोगों का अभी भगवान के ऊपर तो विश्वास है, पर कोई भी साधु के ऊपर विश्वास अभी नहीं. तो भगवान के ऊपर विश्वास है लोगों का, पर कोई साधु के ऊपर विश्वास नहीं. कुछ साल पहले हमारे इधर टाटा कैंसर हॉस्पिटल है. इंडिया में 2 टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, एक इधर कलकत्ता में है और एक बॉम्बे में है. तो इधर के जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनके घर में और उनके कम्युनिटी में मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ. तो पहले बार जब उनके कम्युनिटी में प्रोग्राम करने गया था, तो उधर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके डायरेक्टर आए थे. तो उनके डायरेक्टर क्लास हो गया, सब कुछ हो गया. तो डायरेक्टर पूछे, स्वामी जी मैंने सुना आप IIT से हैं. मैं बोला यस. स्वामी जी मैंने सुना आप टॉपर थे ना. मैं बोला यस. स्वामी जी मैंने सुना कि 12th में भी टॉपर थे ना. हाँ यस. 11 में भी टॉपर थे ना. हाँ यस. कि स्वामी जी यू वेस्टेड so much of money of government. आप IIT से हैं, टॉपर हैं, पैसा इतना आपको स्कॉलरशिप मिला होगा, ये मिला होगा, आपने IIT का एक सीट वेस्ट कर दिया सन्यासी बन के. So he said like this. Then I said to this director that इधर तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको एक प्रश्न पूछूंगा कि डायरेक्टर साहब, आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा है? आपने सबने देखा है मुन्ना भाई MBBS? देखा है. तो मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई के पास भी MBBS डिग्री था कि नहीं? जिस तरह वो कलेक्ट किया था वो तो आपको पता ही है, मूवी अगर देखा होगा. तो अगर मुन्ना भाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आ जाता है और बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, सर्जरी करूंगा, कैंसर ऑन्कोलॉजी करूंगा, ऑन्कोलॉजी सर्जरी करूंगा, which is actually the topmost highest paid surgery. So आप अलाउ करेंगे क्या डॉक्टर साहब? तो बोले नहीं. मैं बोला क्यों ना, मेरे हॉस्पिटल में खाली everyone will die then. I said just like your medical field requires very good people so that it excels, correct? मेडिकल साइंस में अच्छे लोग आएंगे तब ना मेडिकल साइंस बढ़ेगा. मुन्ना भाई आएंगे तो क्या होगा मेडिकल साइंस? So if your medical science is very much required to cure the cancer of body, spiritual science is required to cure the cancer of mind.
एंड स्पिरिचुअल साइंस को हैंडल कर रहे हैं अभी सब मुन्ना भाई लोग। कौन बाबा बन गया, कोई स्कैंडल कर दिया, ये कर दिया, और उन लोगों को देख के लोगों का विश्वास आध्यात्मिकता के ऊपर भारतीयों का चला जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि spirituality doesn't have power and it is just a superstition. What is required is that we need good people, intelligent people, honest people, dedicated people to come and represent the spiritual science of India. And when good people enter, automatically spiritual science will improve. If good people enter medical field, medical science will improve. If good people enter engineering field, it will improve. And if good people enter spiritual field, it will also improve. The value of it will improve. And people will also start realizing its importance in their lives. So, Ved, Bhagavad Gita, सब साइंटिफिक है, पर प्रॉब्लम यह है कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाने वाला का मेन पर्पस बिजनेस रहता है, मेरा कैसे पेट चलेगा। साधु कभी अपना पेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और साधु कभी स्कैंडल नहीं करना चाहिए। तो वो क्या साधु हुआ? क्योंकि साधु को देख के लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास उठता है। साधु अगर गड़बड़ काम करता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो इसीलिए ये जो कपड़ा है ना, इसको पहले रजिस्ट्री नंबर देना पड़ेगा भारत में, तब भारत में आध्यात्मिकता चेंज होगा। ये जो कपड़ा है आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसे नत्थु तेरा आके सर्जरी कर सकता है क्या? उसको MBBS रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। पर भारत में तो कोई भी इसको पहन सकता है सैफरॉन को। तो इसीलिए, क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है भारत में, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और जब इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चालू होगा भारत में, आप देखेंगे भारतीयों का आध्यात्मिकता के ऊपर विश्वास बढ़ने लग जाएगा। Because then people will take it seriously, take this color seriously, take this role as a saint seriously, and take spirituality very seriously. So in this note, हम this fourth chapter का first section complete करते हैं, जहाँ पे भगवान भगवत गीता का इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ये ज्ञान टाइमलेस है। भगवान ने यही ज्ञान जो सूर्य देव को दिया था, वही ज्ञान फिर से अर्जुन को दे रहे हैं, और कुछ फेरबदल नहीं किया। क्योंकि जो सूर्य देव को दिए थे वो अर्जुन के लिए भी रेलेवेंट था, इतना साल पहले की बात। और जो अर्जुन को 5000 साल पहले दिए हैं, वो अभी भी रेलेवेंट है, और लाखों करोड़ों साल तक रेलेवेंट रहेगा। बस हम अगर उसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम भी उसको सीख पाएंगे, अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक वी शुड नॉट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर फिर अभी ऑलरेडी 7:50 हो गया है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? वी कैन टेक सम क्वेश्चंस फॉर 10 minutes, then we can end. Yes, Prabhuji has. So there are some text in this modern. Some of the celebrities, the politicians like this, they are also prefer and talk about Bhagavad Gita. Yes, correct. So that is actually the things are changing a bit. Hare Krishna. So are only Britishers responsible for coining the term mythology? No, we are also equally responsible. It's not Britishers only. They coined it and we accepted it. Right? So we are also responsible. But they started it for their hidden agenda to establish their market here. It was, there was no beggar and thief. Yes, this is a real fact that India's GDP was greater than 27%. There is a personality called Mahipal, and he has archives of India's pre-British India's economic system. He has a lot of archives, Mahipal archives. You can refer them in Google. That is there. Yes, any question? If you want to say one action, I think we need to introduce Bhagavad Gita in school and college. Whether school and colleges introduce Bhagavad Gita or not, at least in our homes, we should introduce Bhagavad Gita. All of you learn Bhagavad Gita and teach to your kids Bhagavad Gita.
So because how much influence we have on school education, college education, we should first work on our influence. At least we have influence on our family. Correct? So that is very, very important. Yes, any question? Yes, Ajay, please. It's not audible. Your voice is not audible. Only noise is coming. I think there is problem in microphone. Noise is coming. No voice. Please write it down. Please write it down. Hello? Yes. Write it down. Yes, yes. This from here the voice was coming. Yes, please speak. Hello? Yes, yes. Hare Krishna. Okay, anyone else has question? You can type it too. Ajay, please type it on the chat box. Anyone else has question? Yes, anyone else has question? Okay, till he asks questions, I'll tell what will happen in Bhagavad Gita later on. So what is going to come up in the next is Arjuna is going to ask a question that अरे मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपने इस ज्ञान को सूर्य देव को दिया, आप तो मेरे साथ पैदा हुए हैं. तो भगवान अभी उसका उत्तर बताते हुए बताएंगे कि अर्जुन आप और मेरे में अंतर है, भगवान और हम में अंतर है. तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि भगवान और हम में क्या अंतर है, भगवान कौन है, कि क्या हम भगवान बन सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिकता करो, मेडिटेशन करो, आप भगवान बन सकते हैं. क्या हम भगवान बन सकते हैं? भगवान और हम में अंतर क्या है? भगवान क्या है सही में? अगर है तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे, और क्यों नहीं दिखाई दे रहे, और कैसे विश्वास कर सकते हैं कि भगवान है? ठीक है, हम आत्मा है, विश्वास कर रहे हैं, पर कैसे विश्वास कर सकते हैं भगवान है और कृष्ण ही भगवान है? तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान क्या बन सकते हैं, भगवान कौन है और हम क्या भगवान बन सकते हैं. यस, अजय प्रभु has asked. Dwarka in Gujarat and Kurukshetra both are far away. One is in Gujarat and in North India. How so quickly Krishna is to come from Hastinapur? Oh, Krishna used to have horses. They were very, very powerful horses. And those time horses were very, very powerful. It's not that so quickly. One day it used to take, and the speed of the horses were very, very fast, and they had a lot of stamina. And Bhagavatam says that when Kurukshetra war got over and Krishna was returning to Dwarka, Krishna did not return in one day. And Bhagavatam says that Krishna took many days to return to Dwarka, and every time in the night Krishna stayed in some king's palace of that province. Bhagavatam says that, हमने पढ़ा था रिसेंटली. यस, राधा प्रेमांजन माता जी, आपको याद है? कृष्ण द्वारका से जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं तो हर प्रांत के राजा उनको निमंत्रण करते हैं, उनके महल में कृष्ण रहते हैं, रात बिताते हैं, फिर सुबह फिर से ट्रैवल करते हैं, लाइक दैट. So it's not that they used to leave go, but Krishna has that power also. जैसे द्रौपदी जी बुलाए तुरंत पहुंच गए थे. So that power Krishna as God he always had. But जब घोड़ों से जाते थे तो he used to take time, 1 or 2, 3 days. और एक महाभारत में इंस्टेंस आता है इसके ऊपर. साल्य करके एक राजा था. कितने लोगों को पता है साल्य? साल्य मद्रास का राजा थे, मद्रास रीजन का, साउथ इंडिया का. एंड ही when he was reaching to Kurukshetra for fighting with Pandavas, तो he had decided मैं पांडव के साथ युद्ध करूंगा. बट जब वो रास्ते में आ रहे थे अपनी सेना के साथ,
दुर्योधन ने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया और साल्य को लगा कि शायद युधिष्ठिर महाराज ने अरेंजमेंट किया ये सब, रास्ते में बीच बीच रास्ते में अच्छा अच्छा खाना पीना सब कुछ। तो फिर साल्य ने बोला कि जो भी हमारे लिए अरेंजमेंट किया है हम उनके लिए युद्ध करेंगे जरूर। तो फिर दुर्योधन आ जाता है कि हमने अरेंजमेंट किया है, आप हमारे साइड से रहिए। तो दुर्योधन वाज वेरी डिप्लोमेटिक। तो इस तरह साल्य फिर पहुंचते तो हैं कुरुक्षेत्र, पर युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं मैं तो आया था, पर दुर्योधन को बात दे दिया, अभी दुर्योधन के साइड में लड़ना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ठीक है, आप जो निर्णय किए हैं, वचन दिए हैं, तो वो तो करना पड़ेगा। तो साल्य बोलते हैं कि मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ आपके लिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा खतरा है कर्ण से, और दुर्योधन जरूर आपको बोलेगा कर्ण का सारथी बनने के लिए। और जब आप कर्ण का सारथी बनेंगे, क्योंकि आपको रथ चलाना अच्छे से आता है, दुर्योधन जरूर बोलेगा आपको कर्ण की सारथी बनने के लिए। जब आप रथ चलाएंगे, कर्ण को थोड़ा डीमोटिवेट करना, ऐसा ऐसा बात बोलना कि कर्ण थोड़ा डीमोटिवेट रहे सब समय। तो ये सेवा थोड़ा कर लीजिए। सो मोटिवेशनल स्पीच का कितना इंपॉर्टेंट है, कर्ण को भी जरूरत होता था। तो मतलब मोटिवेशन तो सबको जरूरत है। अर्जुन के पास भगवत गीता मोटिवेशन था, और कर्ण को साल्य ने डिमोटिवेट किया, तो इसीलिए जो भी हुआ। पर वहां पे भी हमको पता चल रहा है कि पीपल यूज्ड टू टेक मोर टाइम, some 2-3 days to travel across 1000 kilometers per day. Are my father, when he was young, he used to tell that per day he used to chant, he's here, I think he's here. You are there? He used to cycle so far, बहुत सारा किलोमीटर साइकिल करते थे। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना हम साइकिलिंग कर सकते हैं। मेरे पिताजी बोलते थे 30-35 किलोमीटर पर डे वो साइकिलिंग करते थे। तो ये अगर 40 साल पुराना मनुष्य कर पाता था, 5000 साल पुराना घोड़ा कितना कर पाता था। So we should never underestimate. Yes, when Draupadi was insulted, yes, that time Krishna used his mystic power, but generally they used to not use. Generally Krishna used to not use his mystic power. जैसे शांति दूत बन के भगवान गए थे, तो भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था दुर्योधन को। अदरवाइज कृष्णा यूज्ड टू नॉट on general terms show his mystic symbols. Yes, anyone else? Okay, I think it is no questions. Hare Krishna, thank you so much. So fourth chapter फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, भगवान क्या हम बन सकते हैं, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।